I hope everything will be fine. Today we will discuss chemistry, class 9, chapter 7, self-assessment exercises. Now let's see self-assessment exercise 7.1. Question number 1. Identify elements undergoing oxidation and reduction in the following reactions. हमने बताना है जो हमें रिएक्शंस दी हुई है उसमें से कौन सा जो ऑक्सीडेशन का है कौन सा रिडक्शन. नंबर 1 जो हमें रिएक्शन दिया हुआ है वो है N2 plus 3H2 और प्रोडक्ट पे हमारे पास है अमोनिया. आंसर. Nitrogen undergo reduction after gaining of hydrogen and forms ammonia. रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं gain of hydrogen, loss of oxygen, gain of electrons. तो हमें रिएक्शन में क्या हुआ है कि नाइट्रोजन ने है वो हाइड्रोजन को गेन किया है, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस्ड हुई है और प्रोडक्ट पे हमें अमोनिया मिला है. रिएक्शन 2 है 2H2 plus O2 2H2O. Hydrogen undergo oxidation after gaining of oxygen and form H2O water. ऑक्सीडेशन को हम 3 तरह से डिफाइन करते हैं. गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन किया जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो ऑक्सीडाइज हुई है और हमारे पास वाटर फॉर्म हुआ है. रिएक्शन नंबर 3 Fe2O3 plus 3CO प्रोडक्ट पे आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड. Iron undergo reduction after losing oxygen and forms Fe metal. आयरन जो है उसने जब ऑक्सीजन को लूज किया है तो वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई और हमारे पास प्रोडक्ट पे क्या गया, आयरन मेटल. कार्बन undergo oxidation after gaining of oxygen and forms CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन ने जब ऑक्सीजन को गेन किया जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज हुई है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. नंबर 4 एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन और प्रोडक्ट पे हमें मिला है Al2O3. Aluminium undergo oxidation after gaining of oxygen and forms Al2O3. एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को गेन किया है और हमारे पास प्रोडक्ट में आ गया Al2O3. Now self-assessment exercise 7.2 question number 1. In the following reaction, identify which element is oxidized and which element is reduced in the following reaction. Mg plus S MgS. अब हमने इधर ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से बताना है कि कौन सा एलिमेंट रिड्यूस्ड और कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है. On the reaction side, the oxidation number of magnesium atom is 0 and the oxidation number of sulfur atom is also 0. And on the product side, the oxidation number of magnesium atom is +2 and the oxidation number of sulfur atom is -2. So magnesium is oxidized and sulfur is reduced. मैग्नीशियम जब 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है तो इसकी वजह से मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज. और सल्फर जो है वो 0 से -2 स्टेट में गया है तो सल्फर क्या हो गया, रिड्यूस. नेक्स्ट रिएक्शन है 4Na plus O2 2Na2O. On reaction side, the oxidation number of Na metal यानी सोडियम atom is 0 and the oxidation number of oxygen atom is also 0. And on product side, the oxidation number of sodium atom is +1 and the oxidation number of oxygen atom is -2. So sodium is oxidized and oxygen is reduced. सोडियम जो है वो 0 से गया है +1 में तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज. और ऑक्सीजन जो है 0 से आया है -2 में तो वो क्या हो गया है, रिड्यूस. नेक्स्ट
2Al plus 3Cl2 to AlCl3. On reaction side, the oxidation number of aluminium atom is 0 and the oxidation number of chlorine atom is also 0. And on product side, the oxidation number of aluminium atom is plus 3 and the oxidation number of chlorine atom is minus 1. So aluminium is oxidized and chlorine is reduced. Aluminium जो है वो 0 से गया है plus 3 स्टेट में तो हो गया ऑक्सीडाइज और क्लोरीन जो है वो 0 से minus 1 में तो हो गया है reduced. Last Mg plus H2 MgH2. On reaction side, the oxidation number of magnesium atom is 0 and the oxidation number of H atom is also 0. And on product side, the oxidation number of magnesium atom is plus 2 and the oxidation number of hydrogen atom is minus 1. So magnesium is oxidized and hydrogen is reduced. मैग्नीशियम जो है वो 0 से गया है +2 में तो क्या हो गया है ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन जो है वो 0 से आया है -1 में तो क्या हो गया है वो reduced. Now self-assessment exercise 7.3 question number 1. One major problem of air pollution is the formation of acid rain. Air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide combines with oxygen and water vapors in air to form H2 and HNO, H2SO4 and HNO3. These acids fall to the ground with rain, making the rain acidic. Clouds can also absorb the acid and carry them hundreds of kilometers away from where they were released. Determine the oxidation number of nitrogen in NO2 and HNO3 or sulfur in SO2 and H2SO4. Acid rain is formed by the following chemical reactions: N2 plus O2, 2NO, 2NO plus O2, 2NO2, 2NO2 plus half O2 plus H2O, we will get 2HNO3. Those are 4NO2 plus O2 plus 2H2O, we will get 4HNO3. Acid fall in the form of rain called acid rain. Similarly, for sulfur, when sulfur combines with oxygen, we will get SO2. When sulfur dioxide combines with oxygen, we will get sulfur trioxide. When sulfur trioxide combines with water, we will get sulfuric acid, H2SO4. Acid fall in the form of rain called acidic rain. जब एसिड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉल करेगा तो हम उस रेन को क्या कहते हैं? एसिड रेन. Determination of oxidation number. Oxidation number of nitrogen in NO2 is oxidation number of nitrogen plus 2 oxygen is equal to 0. क्योंकि जो तो algebraic sum of oxidation number in compound वो क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए. तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है प्लस 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज +1 plus oxidation number of nitrogen plus 3 molecules of oxygen is equal to 0. Now we will find oxidation number of nitrogen in NO2 and in HNO3. The oxidation number of oxygen is -2. When we multiply it by 2, we will get -4. And oxidation number of oxygen in HNO3 is also -2. We will get -6 plus 1. For NO2, we will get oxidation number of N -4.
is equal to 0, or for HNO3 we will get oxidation number of nitrogen plus 1 minus 6 is equal to 0. Oxidation number of nitrogen in NO2 is plus 4 and oxidation number of nitrogen in HNO3 is 5 plus 5. Oxidation number of sulfur in sulfur dioxide and oxidation number of sulfur in sulfuric acid. Oxidation number of sulfur plus 2 moles of oxygen is equal to 0, and oxidation number of sulfur plus 1 into 2 plus 4 molecules of oxygen is equal to 0. Oxidation number of sulfur plus 2 into minus 2 oxidation state of oxygen is equal to 0, and plus 1 into 2 plus oxidation number of sulfur plus 4 into minus 2 for oxygen is equal to 0. Oxidation number of sulfur minus 4 is equal to 0, and oxidation number of sulfur plus 2 minus 8 is equal to 0. Oxidation number of sulfur is equal to plus 4 in SO2, and oxidation number of sulfur in H2SO4 is plus 6. सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, प्लस करना है माइनस करना है. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादातर -2 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है, और जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होती है. ये आपने चंद रूल याद करने हैं तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी. Now let's move forward. Self-assessment exercise 7.4. Question number 1. The torch cell discharges electricity because of an oxidation reduction reaction that takes place between zinc and manganese dioxide. हमें रिएक्शन दिया हुआ है टॉर्च सेल में जो अकर होता है जिंक और मैंगनीज डाइऑक्साइड के दरमियान. अब हमने बताना है कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन. हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का बताना है. आंसर जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन रिएक्शन साइड इज 0, Mn की है +4, O2 की है -2 और H2O की अगेन 0 है. और ऑन प्रोडक्ट साइड Zn की जो है वो +2 है और हाइड्रोक्साइड आयन की -1 है. Mn2 की है Mn सिंगल Mn की है -3 और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे we will get Mn2 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -6 और ऑक्सीजन की है +2. Zinc acts as reducing agent as itself oxidized, while MnO2 acts as oxidizing agent as itself being reduced. Zinc जो है वो खुद क्या हुआ है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और MnO2 जो है वो खुद क्या हुआ है रिड्यूस्ड हुआ है तो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Question number 2. Identify oxidizing and reducing agent in the following reactions. 2S plus Cl2 S2Cl2, और फिर जो है सल्फर फ्री स्टेट में तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्लोरीन का भी 0 है. प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन का है -1 और सल्फर का है +2. Sulfur is reducing agent and Cl2 is oxidizing agent. Sulfur जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो क्या होगा reducing agent, और क्लोरीन जो है वो खुद reduce हुआ है तो क्या होगा oxidizing agent. B दिया हुआ है 2Na plus Br2 2Na Br.
Oxidation states of free element is 0 on reaction sides, and on product sides we will get +2 for sodium and -2 for bromine. सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि सोडियम जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ब्रोमीन के लिए और ब्रोमीन जो है वो खुद रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्लोरीन सोडियम के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन हमें दिया हुआ है H2 plus S H2S. Oxidation state for hydrogen and sulfur in free state is 0 and on product side oxidation state of hydrogen is +1 or sulfur की है -2. H2 is reducing agent and sulfur is oxidizing agent. H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है तो सल्फर के लिए क्या है रिड्यूसिंग एजेंट और सल्फर जो है रिड्यूस हुआ है तो वो हाइड्रोजन के लिए क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Now self-assessment exercise 7.5 question number 1. Sketch an electrolytic cell for electrolysis of fused KCl. The direction of flow of electrons is from anode to cathode क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कैथोड पे रिडक्शन होती है दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो क्या है फ्रॉम एनोड टू कैथोड है। एनोड में जो रिएक्शन होगा वो है एनोड जो होगा इसके अंदर वो क्या होगा क्लोराइड आयन कैथोड होगा पोटेशियम आयन और फिर जब हम इसको बना सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं with the help of anode and cathode and salt bridge which will act as a path of flow of electrons will flow from salt bridge and reach from anode to cathode. Now question number 2, electrolytic cell shown in figure 7.6 in your book is used for electrolysis of fused sodium chloride. Indicate the direction of flow of electrons. Identify anode and cathode. The direction of flow of electrons is from anode to cathode. इसके अंदर एनोड जो होगा वो होगा क्लोराइड आयन और कैथोड होगा सोडियम प्लस आयन। Now question number 1. ये मिसिंग है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.6 होनी चाहिए बुक के अंदर लेकिन ये जो है वो क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.5 तो ये बुक के अंदर तो हम उसी हिसाब से डिस्कस करते हैं। Sketch a voltaic cell labeling the cathode, anode and the direction of flow of electrons. Use the following chemicals: silver, zinc, silver nitrate that is AgNO3 and zinc sulfate that is ZnSO4. Zinc is more active than Ag. हिंट हमें दी हुई है कि जिंक जो है वो ज़्यादा एक्टिव है सिल्वर से। अब हमने वोल्टिक सेल को स्केच करना है। The direction of flow of electrons is from anode to cathode. एनोड हमारे पास होगा जिंक और कैथोड होगा हमारे पास सिल्वर क्योंकि जो ज़्यादा एक्टिव मेटल है वो क्या होगा उसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन होगी और तो हमने उसे रख दिया एनोड और जो लेस एक्टिव है वो क्या होगा उधर जो होगी वो रिडक्शन होगी तो हमने उसे रख दिया कैथोड। Now self-assessment exercise 7.6. Identify the half cell in which oxidation occur and the half cell in which the reaction occur in the following voltaic cell. अच्छा जी अब हमने हाफ सेल्स बताने के किस में ऑक्सीडेशन में किस में रिडक्शन हुई है। एट एनोड जिंक कन्वर्ट हुआ है फ्रॉम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट टू Zn+2 और उसने लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन
जो है वो +1 से गया है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में. At anode, oxidation occurred and at cathode, reduction occurred. एनोड में क्या हुआ है, जिंक जो है वो +2 में गया है, 0 से +2 में गया तो क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई. और कैथोड जो है वो हाइड्रोजन जो है वो 0 से +1 से गया है 0 में तो क्या हुई है, रिडक्शन हुई है. That's all about chapter number 7, self-assessment exercise. If you have any problem, comments in video. And if you want any development in my videos, please let me know through your comments. Thanks for watching. Please share my videos, like my channel and videos. Press the bell icon to subscribe and to get notifications for all the videos which will be uploaded in the future. Thanks again. Allah Hafiz.